Welcome to Studyline Institute. Today's lecture is about management. So let's begin with the lecture of management. Now, we need to understand the concept of management. What is a management? Do you know how to manage something? The concept of management has become essential. Now, in modern days, we need to manage everything. If we are in an organization, if we are in a company, we need to handle all the activities of our company. So, the concept of management has been essentials. ज़रूरी है. Essentials यानी need. The government or the business or the company need management. In modern world, crowded with uneven growth of populations, it has necessitated the smart use of resources. क्यों ज़रूरत है हमें मैनेजमेंट की? टू यूज़ द रिसोर्सेज. हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है, वो स्मार्ट तरीके से करना है. बैकअप बाय स्ट्रेटजिक मैनिपुलेशन ऑफ रिसोर्सेज. वी नीड different types of strategies in our business. So what is going to happen? We are managing all of these activities, but the process is called management. This process is described as management. मैनेजमेंट यानी हमें स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करनी है, बिजनेस को हैंडल करना है, उसे ही कहते हैं मैनेजमेंट. Now, if we see further the definition of management, we need to remember at least two definitions. We need to understand what is management. So, management means what? The art of getting things through others. बहुत ही easy definition है, one line definition है. Art of getting things. Getting things यानी काम करवाना है हमें किसी से, हमें नहीं करना, हमें किसी से काम करवाना है थ्रू अदर्स, उसे ही तो मैनेजमेंट कहते हैं. मैनेजमेंट मीन्स यू नीड टू गेट वर्क डन एनी हाउ. यू नीड टू मैनेज, यू नीड टू control your employees, your worker, and you need to get the work done. This definition is given by the Parker Ford. Second definition is management is a process. Management एक process है, consisting. What include in the management? Planning, organizing, actuating, and controlling. If we need to manage something, we need to have a plan. हमें मूवी देखने भी जाना होता है तो we need to create a plan. कब जाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे वगैरह. So, in the organization, we need to have a planning, organizing, monitoring system, all we need. So, that process is called management. उसी process को क्या कहेंगे? Management. Now, nature of management. What is a nature of management? So, first point is objective oriented. Management कैसा है? Management का nature क्या है? First of all, जब भी हम कुछ manage करते हैं, whenever we need to manage something, we have a goal, we have a object कि हमें क्या करना है. We need to get work done. If we have some task, we need to complete the task. So, the management is nature oriented. Second point is continue process. आज मैनेजमेंट किया, कल करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है. Management is a continue process. Today we need to manage, tomorrow also we need to manage. It is a continue process, not a one time process. Universally applicable. Yes, ऐसा नहीं है इंडिया में मैनेजमेंट चाहिए, यूएसए में मैनेजमेंट नहीं चाहिए. किसी भी कोने में आप है, यू नीड अ मैनेजमेंट. हमारे साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सभी जगह पे समान रहते हैं, सभी जगह पे एप्लीकेबल रहते हैं. तो मैनेजमेंट है
वो भी कुछ ऐसा ही है. मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. Every organization, small company, big company, everyone need management in their company to success. Now, human activities. Human activities means there are employee, there are machines, but we need to have a human. मैनेजमेंट कौन करेगा? मशीन्स तो नहीं करेंगे. मैनेजमेंट इज डन बाय अ ह्यूमन एक्टिविटी. सो मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है. मेंटल एंड परसेप्चुअल एक्सरसाइज. व्हाट इज दिस? मेंटल, it means whenever some problem arise, whenever there is something in problematic sense, we need to exercise our mental and conceptual mind to overcome that problem and to see the solution of that problem. Dynamic. Yes, management is very dynamic because it strives to synthesize various changing variables. We need to change process. आज के जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा. We need to change our strategy, we need to change our advertisement, process, activities, everything. So that means management is dynamic. Art of human handling, leadership quality. Yes, हम मैनेजमेंट को लीडरशिप क्वालिटी भी कह सकते हैं. We need to lead our employee, we need to lead our company. हमें लीड करना है, आगे लेके जाना है, मैनेज करना है सारी कंपनी को. एंड इट्स अ आर्ट ऑफ ह्यूमन हैंडलिंग बिकॉज मशीन्स को हम रिपेयर करते हैं, राइट, बट उसको हैंडल कर सकते हैं. बट फॉर द ह्यूमन, जो हमारे एम्प्लॉई है, वर्कर्स है, उसके लिए हमें हैंडलिंग के लिए एक स्किल्स चाहिए, जो स्किल इज़ नीडेड फॉर मैनेजमेंट. द पर्सन हु इज़ गोइंग टू मैनेज, that person need to have a art of human handling. So these are the nature of management. Now we have a next topic is scope of management. What is a scope? Scope defines the circumference of activities. It proves as a basis for any task, functions, authorities for the determinations of management. So management का scope क्या है? Management is a process, right? So that's we know that management is a perceptual mental process as under. कैसे process है ये हम देखते हैं. Planning. The first thing is planning. अगर हमें मूवी देखने जाना है तो हमें पहले प्लान करना है. हम कहाँ पे जाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, कब देखेंगे. सेम थिंग विद द मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ कंपनी, वी नीड टू प्रिंट आउट द एक्टिविटी. व्हाट प्रोडक्ट आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस, when we are going to produce, and etc. The second one is organizing. Organizing, it's like we are now implementing our plan. जो प्लान बना लिया है हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. मूवी देखने जाना है, डिसाइड कर लिया, अब हम टिकट्स देखने जा रहे हैं, कौन से थिएटर्स में है वहाँ पे जाके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी हमारे मेंबर्स है, जो भी हमारी टीम है, उसे कांटेक्ट करेंगे. इन ऑर्गेनाइजेशंस वी नीड टू एस्टैब्लिश a person's relationship, human resources, machines, machinery है, materials है, वो सब चाहिए, तो वो organized करना पड़ता है. So first is planning, the second one is organizing, next one is directing. So after that word we need to advertise, we need to motivate the people to do work as per the expectation of our company. We need to direct the plan into a right path. हमें right path पे हमारा plan ले जाना है, उसको direct करना है. Next one is
कोऑर्डिनेशन यानी हमारी मैनेजमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ रहते हैं, वर्कमैन रहते हैं, तो हमें सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है। ऊपरी लेवल से लेके नीचे के लेवल तक सब जगह पे हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। जो वर्क है वो बहुत सारे लोग में डिवाइड रहता है, सो वी नीड टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ सेवरल पीपल टू अचीव आवर टारगेट। लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. After everything is happening in the country, we are producing country, we have purchased product, we have purchased the material of the product, we direct the persons, we are coordinating between the different employees. Now we need to control the activity, because without control all the things can fall out. कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस कंट्रोल यानी नज़र रखना, हमें देखना है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसे ही प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो दैट इज़ दिस कंट्रोलिंग एंड दिस द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट.